एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नेचुरल रबर के हवाले से। सो व्हाट इज अ नेचुरल रबर? नेचुरल रबर इज एक्चुअली अ हाइड्रोकार्बन पॉलीमर ऑफ it's actually a hydrocarbon polymer built up of isoprene monomer. So what is this isoprene? It's a hydrocarbon polymer जो बना हुआ है isoprene monomer से. So what is this isoprene? It's basically 2-methyl 1,3-butadiene. 2-methyl 1,3-butadiene is actually what is called as isoprene, जो monomer है to the polymer that's called as natural rubber. So it's actually like this: CH2 double bond C, single bond CH3, then single bond C H, then double bond CH2. So this is 1 2 3 4. It's 2-methyl 1,3-butadiene. This is called as isoprene. इसी मोनोमेरिक यूनिट से आपका पॉलीमर बनता है by means of polymerization. तो वो जो पॉलीमर बनता है, that polymer is called as natural rubber. So how the reaction takes place is actually like this: that we have a monomeric unit, that is CH2 double bond C, single bond CH3, then there is CH single bond double bond CH2. This is the isoprene monomer, जिसका दूसरा नाम है 2-methyl 1,3-butadiene. हमें n टाइम्स लेंगे तो इसका पॉलीमराइजेशन जब होता है तो इट लीड्स टू 1,4 एडिशन. 1,4 एडिशन होता है. ये डबल बॉन्ड बीच में चला जाता है, ये एंड में चला जाता है. अगर आप ऐसे करेंगे, if you move this double bond here and if you move this double bond here by means of resonating structures, तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा. This combines with the next entity with the minus side and this is the minus side of कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कंबाइन होगा विद द कार्बन ऑफ पॉजिटिव चार्ज द नेक्स्ट मॉलिक्यूल. तो ये ऐसे सिस्टम बनेगा. कैसे बनाएंगे आप? CH2 सिंगल बॉन्ड करके, क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में चला गया तो इट्स लाइक दिस CH2 सिंगल बॉन्ड CH डैश डैश करके होल N हम करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल रबर. दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल रबर. तो कैसे बनता है ये एक्चुअली दिस नेचुरल रबर? हमारे पास एक ट्रॉपिकल रबर ट्री होता है. सो वी आर हैविंग एक्चुअली अ रबर ट्री. इस रबर ट्री से क्या है, व्हाइट कलर्ड फ्लूइड निकलता है. व्हाइट कलर्ड फ्लूइड निकलता है. उस फ्लूइड का नाम है लेटेक्स. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज लेटेक्स. उस लेटेक्स को आप कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने के बाद उसको एसिड ट्रीटमेंट दिया जाता है. एसिड ट्रीटमेंट यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. तो फिर जो है वो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करके आपका जो है पॉलीमर बनता है एंड दैट पॉलीमर इज एक्चुअली नेचुरल रबर. फिर पॉलीमराइजेशन कैसे होता है? बिल्कुल ऐसे ही. आपके पास एक मोनोमेरिक यूनिट होता है इस लेटेक्स में, दैट इज द isoprene unit. Then you are polymerizing it by means of 1,4 addition. You are getting a natural rubber. This is how the reaction takes place. Now, since there is a double bond, in natural rubber, so it can have it can show geometrical isomerism. So in this particular case, जो आपका natural rubber है, इसमें जो configuration है, that is cis configuration. So in natural rubber, configuration of double bond. हम लिखेंगे ऐसे, configuration around double bond is cis. So the polymer जो बनेगा, that's actually cis polyisoprene. उसी को हम नाम देते हैं नेचुरल रबर. सो नेचुरल रबर में जो कन्फिग्रेशन डबल बॉन्ड की है, दैट इज एक्चुअली सिस कन्फिग्रेशन. कैसे?
वी कैन शो इट लाइक दिस, हमारे पास CH2 है, then there is C, then there is CH3, then there is double bond, then there is H, again CH2 over here, then there is again H and CH2. ये फिर कंटिन्यू हो जाएगी ये चेन यहाँ से, तो होल N के जो है, दिस इज बेसिकली अ पॉलीमर. आप देख सकते हैं यहाँ ये CH2 ग्रुप और ये CH2 ग्रुप ऑन द सेम साइड है ऑफ दिस डबल बॉन्ड, सो इट्स अ सिस कॉन्फिगर. एंड आपके पास एक ये CH2 ग्रुप है एंड दिस इज द CH2 ग्रुप अराउंड दिस डबल बॉन्ड, इट्स अगेन ऑन द सेम साइड, सो सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, सो द कॉन्फिगरेशन इज सिस. दैट्स व्हाई दिस पॉलीमर इज कॉल्ड एज नेचुरल रबर. सो नेचुरल रबर में जो आपका कॉन्फिगरेशन रहता है वो कॉन्फिगरेशन होता है सिस कॉन्फिगरेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. हम इसका ट्रांस कॉन्फिगरेशन भी बना सकते हैं. सो इट्स ट्रांस कॉन्फिगरेशन, इट्स ट्रांस polymer can also exist, but that is brittle. जो इसका ट्रांस पॉलीमर होता है वो भी एग्जिस्ट करता है और उसका लेकिन जो प्रॉपर्टी है दैट इज ब्रिटल, दैट्स मोर ब्रिटल देन cis polyisoprene which is called as natural rubber. I hope you understand it. So what is basically now इसका जो है ट्रांस पॉलीमर जो होता है, वन मोर पॉइंट आई शुड ऐड हियर, ट्रांस पॉलीमर जो होता है इसका नाम होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं इसका गट्टा पर्चा, दिस इज कॉल्ड एज गट्टा पर्चा, दिस इज कॉल्ड एज गट्टा पर्चा, GUTTAPERCHA, गट्टा पर्चा. गट्टा पर्चा स्टैंड्स फॉर ट्रांस पॉलीमर ऑफ दिस polyisoprene, तो दैट इज लेकिन brittle. Now what are its properties? Let's have a look. प्रॉपर्टीज में इसका नंबर 1 प्रॉपर्टी है दैट इज इट हैज हाई इलास्टिसिटी. इट possesses remarkable elasticity. ये इलास्टिसिटी क्यों इसमें आ गई? ड्यू टू इट्स कॉइलेड स्ट्रक्चर. नेचुरल रबर में जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉइलेड. दिस कॉइलेड स्ट्रक्चर अराइजेस due to cis configuration, which arises due to cis configuration. So cis configuration की वजह से इसमें coiled structure आता है. जब coiled structure आता है तो it acts like a spring. That's why it's having high elasticity. Number next is it's having large water absorbing capacity. Large water absorbing capacity. It absorbs water to a greater extent, and this is not a good property as far as applications of this natural rubber is concerned. It's having low tensile strength also. Low tensile strength, low resistance to abrasion, लो रेजिस्टेंस टू एब्रेजन. एब्रेजन मीन्स वियर होना या ग्राइंड होना बाय फ्रिक्शन. यहां पे लिखेंगे वियर और ग्राइंड बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन से मटेरियल में वियर होना या टियर होना या ग्राइंड होना, तो उसको हम बोलते हैं एब्रेजन. एंड इट शुड नॉट वियर, इट शुड नॉट टियर, इट शुड नॉट ग्राइंड बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन, सो इट शुड रेजिस्ट एब्रेशन. लेकिन उसकी जो रेजिस्टेंस टू एब्रेशन है वो लो है. दिस इज नॉट अ गुड साइन आल्सो. थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू organic solvents. It's not resistant to many organic solvents. And get easily attacked by oxidizing agents. Oxidizing agents पे इसको असर करते हैं. And organic solvents, it doesn't resist the action of organic solvents, means organic solvents को dissolve भी कर सकते हैं. तो ये जो properties हैं
these are not the properties good for natural rubber as far as application part is concerned. So what we do is we basically improve, we basically try to improve on these properties. हम चाहते हैं कि हम इन properties को improve करें. So to improve these properties, meaning that to make it resistant to organic solvents, to make it resistant to oxidizing agents, so that it should not get attacked by oxidizing agents. And next, to have a low water absorbing capacity, it must not absorb water to a greater extent. It must possess low water absorbing capacity. It must possess high tensile strength, and it must be resistant to abrasion. It must possess high resistance to abrasion. So in properties को हमें क्या करना है? We have to actually improve them. So to improve these properties, we carry out a process called vulcanization. So vulcanization हम इसलिए करते हैं ताकि हम improve कराएं properties natural rubber में. कौन से properties? Resistance to, it must be resistant to organic solvent, it must be resistant to oxidizing agents, it must be resistant to abrasion, it must possess high mechanical strength, high tensile strength, it must possess low water absorbing capacity. So ये जो properties हैं इनको enhance करने के लिए, improve करने के लिए हम एक process करते हैं जिसका नाम है vulcanization. So what this process is, let's talk about that. So vulcanization एक ऐसा process है, it's a process of cross linking. It's a process of cross linking rubber chains. जो rubber chains है polymer के, उनको आप क्रॉस लिंक कराते हैं. सो प्रोसेस ऑफ क्रॉस लिंकिंग रबर चेन्स बाय सल्फर लिंकेजेस. प्रोसेस ऑफ क्रॉस लिंकिंग रबर चेन्स बाय सल्फर लिंकेजेस, इसका नाम है वोल्कनाइजेशन, कॉल्ड वोल्कनाइजेशन. अब ये आप कैसे करते हैं? हाउ यू डू इट? यू आर डूइंग इट, दिस इज डन बाय हीटिंग. This is done by heating rubber with sulfur at 3132, 373 to 415 K in presence of zinc oxide as accelerator. It increases the rate of vulcanization. Zinc oxide increases the rate of vulcanization. So हमें क्रॉस लिंक कराने हैं पॉलीमर चेन्स बाय मीन्स ऑफ सल्फर लिंकेजेस. उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वोल्कनाइजेशन. अब कैसे करते हैं ये वोल्कनाइजेशन? वी डू इट बाय हीटिंग रबर विद सल्फर एट दिस टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड acts as an accelerator which enhances or increases the rate of vulcanization process. So usually जो क्रॉस लिंकिंग होती है, सल्फर क्रॉस लिंकिंग, यूजुअली सल्फर क्रॉस लिंकिंग takes place at allylic carbon. allylic carbon पे जो है क्रॉस लिंकिंग हुआ करती है. सो व्हाट्स allylic carbon? अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो वो वाला कार्बन जो नेक्स्ट है डबल बॉन्ड में, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन है. सो दिस कार्बन इज कॉल्ड एज allylic carbon. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब हमने पढ़ा था GOC चैप्टर 1, दैट्स कॉल्ड एज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वो वीडियोस आप देख सकते हैं. सो allylic कार्बन क्या होता है, विनाइलिक कार्बन क्या होता है, या बाकी एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्बन्स इन GOC चैप्टर 1. नाउ सो कार्बन नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड एज allylic कार्बन. सो इसी कार्बन पे जो है क्रॉस लिंकिंग यूजुअली हुआ करती है. सो वी आर बेसिकली शोइंग इट ओवर हियर. इट्स लाइक दिस. ये आपका पॉलीमर है,
This is the natural rubber. This is basically the natural rubber. So cis polyisoprene है, that's natural rubber. दूसरा chain में यहाँ पे, this is one chain, we are making a next chain over here. So we'll make a next chain, that is CH2, single bond C, CH3, ये दूसरी चेन है, दिस इज द नेक्स्ट चेन, n times है ये दूसरी चेन. So these are the two chains which are basically one over the another, but the point is now there occurs cross linking. अब देखिए ये वाला कार्बन जो है, this is next to allylic double bond carbon, so it's allylic carbon. This is also allylic carbon because it's next to double bond carbon over here. This is the allylic carbon and these are the allylic carbons, right? And is here also अगर आप देखेंगे यहाँ, this is the carbon next to double bond carbon, allylic carbon है, allylic carbon है because this is the carbon next to double bond carbon, this is the carbon next to double bond carbon, it's allylic. इन्हीं allylic carbons के दरमियान जो है सल्फर लिंकेजेस डेवलप होते हैं. सो व्हाट वी कैन शो इज, यहाँ पे CH2 था तो एक ही H रहेगा, एक चला जाएगा, तो यहाँ पे S सिंगल बॉन्ड ये होता है, H चला जाएगा, सो एक H चला जाएगा, एक यहाँ से भी चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है एक लिंकेज डेवलप होगा, दैट इज द SS सिंगल बॉन्ड दिस. सिमिलरली हियर इट इज SS सिंगल बॉन्ड दिस. यहाँ पे एक H कम होगा, एक H यहाँ से भी कम होगा बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 और हाइड्रोजन 1 4, तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा, उसके बदले में सल्फर लिंकेजेस डेवलप हो जाएंगी. यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, S देन दिस, इसमें एक हाइड्रोजन चला जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन चला जाएगा. सो दिस इज हाउ बेसिकली दीज चेन्स क्रॉस लिंक. सो यूजुअली क्रॉस लिंकिंग जो होती है दैट टेक्स प्लेस एट एलाइलिक कार्बन. एलाइलिक कार्बन वो वाला कार्बन होता है विच इज नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड कार्बन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. सो इस तरीके से जो है आपका वोल्कनाइजेशन होता है. It gives rise to enhanced properties. What it leads to, let's have a look what it leads to. So it basically it causes increase in mechanical strength, increase in mechanical strength. Number second, possesses low water absorbing capacity. Number third, it becomes resistant to organic solvents and oxidizing agents. Organic solvents do not have much effect on vulcanized rubber. Oxidizing agents do not have effect on vulcanized rubber, and vulcanized rubber is having low water absorbing capacity, which was not so in case of natural rubber without vulcanization. And then there is increase in mechanical strength also. So these are some of the properties which have been improved once vulcanization takes place. I hope you understand it. एंड जितना आप सल्फर डालेंगे इसमें, द अमाउंट ऑफ सल्फर एडेड डिपेंड्स अपॉन rigidity required in product. मतलब जो प्रोडक्ट आप रबर से बनाते हैं उस प्रोडक्ट में कितनी रिजिडिटी आपको चाहिए, अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज करेंगे सल्फर कंटेंट. सो अमाउंट ऑफ सल्फर कितना डालेंगे इस रबर में वोल्कनाइजेशन प्रोसेस करने के लिए, वो डिपेंड करेगा व्हाट रिजिडिटी यू बेसिकली रिक्वायर, व्हाट रिजिडिटी यू एक्चुअली रिक्वायर. if you add 5% sulfur in natural rubber, it's usually used for rubber bands or tires. Now if you add 30% sulfur, so it's normally used for battery
केसिंग, बैटरी केसिंग करने के लिए, बैटरी जो उसका केस बनाने के लिए जो है आप हाई कंटेंट ऑफ सल्फर ऐड कर सकते हैं. So this is actually what is called natural rubber and how you do vulcanization process and what actually vulcanization is and what happened once you do vulcanization. Properties improve hoti hai and then depending upon the amount of sulfur added to achieve rigidity, so it depends upon what product you want. It's all about rubber and its vulcanization process. I hope you understand it. Do watch my videos, and if you like them, please do subscribe also. Thank you very much.